Gopijana Vallabha Girivardhani Yasodanandana Prajajanaranjana Yasodanandana Prajajanaranjana Yamunatira Vanachandi Yamunatira Vanachandi Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivardhani Gopijana Vallabha Girivardhani Yasodanandana Prajajanaranjana Yasodanandana Prajajanaranjana Yamunatira Vanachandi Yamunatira Vanachandi Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Krishna Balara Krishna Balara Krishna Balara Jaya Krishna Balara Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram
Jai Radhe Shyam Jai Lalita Viṣaya Radhe Shyam Jai Lalita Viṣaya Jai Radha Shyama Sundara Radha Shyama Sundara Radhe Jaya Gauranita Jaya Gauranita Gauranita Jaya Gauranita Jai Gauranita 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 Jaya Gauranita Jai Prabhupada Jai Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jai Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jaya Jai Gurudev 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 Jaya Gurudev Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo Gaura Nitai Gaura Jayam Vishnupad Paramahamsa Pariva Jagacharya Astotarasita Shri Shri Madhi Divine Grace ISKCON founder Acharya Jagadguru Sri Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Pariva Jagacharya Astotarasita Shri Shri Madhi Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai. Ananta Gauri Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namo Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपाल गोपीनाथ श्याम राधा कुंड गिरि गौरवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय नवद्वीप मायनपुर धाम की जय जगन्नाथ पुरी धाम की जय जमुना माई की जय गंजेश माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय समवेत भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंद all glorious assembled devotees all glorious assembled devotees all glorious assembled devotees all glory to Sri Guru Sri Gauranga Namo Vishnu Padya Krishna Prithai Bhutai Srimati Bhakti Tirtha Swami Srimati Krishna Parashitana Shri Gaura Karuna Sakti Bhakti Tirtha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Magyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshuru Meditandena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manodvishtam Sapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam
dadati svapadantikam Vandeham Sri Gurun Sri Yuttapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Viṣaya-pravālāḥ Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopi Sai Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrindavan Sute Devi Padamani Hari Priya Panchakalpatarubhyascha Kripa Sundarbhya Vacha Patitanam Abhivyo Vaishnavyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita Sitis Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 15, the Yoga of the Supreme Person, text number 2. Adhaś ūrdhvam prasṛtās śākhā adhaś ūrdhvam prasṛtās śākhā guṇa-pravṛddhā viṣaya-pravālāḥ guṇa-pravṛddhā viṣaya-pravālāḥ adhaś mūlāni anusantatāni adhaś mūlāni anusantatāni karmānubandhīni manuṣya-loke karmānubandhīni manuṣya-loke adhaś ūrdhvam prasṛtās śākhā guṇa-pravṛddhā viṣaya-pravālāḥ adhaś mūlāni anusantatāni karmānubandhīni manuṣya-loke
adhaś. adhaś ūrdhvam prasṛtās śākhā guṇa-pravṛddhā viṣaya-pravālāḥ mūlāni anusantatāni. Adhaḥ, downward, śākhā, end, ūrdhvam, upward, prasṛtās, extended, tasya, eat, śākhā, branches, guṇa, by the moods of material nature, pravṛddhāḥ, developed, viṣaya, sense objects, pravṛddhāḥ, twigs, adhaḥ, downward, śākhā, end, mūlāni, root, anusantatāni, extended, karmā, to work, anubandhīni, bound, manuṣya-loke, in the world of human society. Translation and purport by Divine Grace A.C. Bhakti Swami Srila Prabhupada Ki. The branches of this tree extend downwards and upward, nourished by the three modes of material nature. The twigs are the object of the senses. This tree also has roots going down, and these are bound to the fruitive actions of human society. Purport. The description of the banyan tree is further explained here. Its branches spread in all directions. In the lower part, there are variegated manifestations of living entities, human beings, animals, horses, cows, dogs, cats, etc. These are situated on the lower parts of the branches, whereas in the upper part are higher forms of living entities, the demigods, Gandharvas, and many other higher species of life. As a tree is nourished by water, so this tree is nourished by three modes
or material nature. Sometimes we find that the tract of land is barren for want of sufficient water. And sometimes the tract is very green. Similarly, where particular modes of material nature are predominantly greater in quantity, the different species of life are manifested accordingly. The twigs of the tree are considered to be the sense objects. By development of the different modes of nature, we develop different senses, and by the senses we enjoy different varieties of sense objects. The tips of the branches are the senses, the ears, nose, eyes, etc., which are attached to the enjoyment of different sense objects. The twigs are sounds, form, touch, and so on. The sense object. The subsidiary roots are attachment and aversions, which are byproduct of different varieties of suffering and sense enjoyment. The tendencies towards piety and impiety are considered to develop from these secondary roots, which spread in all directions. The real root is from Brahmaloka, and the other roots are in the human planetary systems. After one enjoys the result of virtuous activities in the upper planetary systems, he comes down to this earth and renews his karma or fruitive activities for promotion. This planet of human beings is considered the field of activities. You are translating? But here you say also have Hindi. This is English class, but you also have Hindi. It's a combined one. So I want to try to satisfy everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. In this verse, Krishna is describing this material world. इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत का वर्णन कर रहे हैं. And he's giving allegory. It's allegory. और एक उपमा दे रहे हैं भगवान. He said, adhaś ūrdhvam. Adhaḥ, ūrdhvam. The material world is like this. भौतिक जगत इस प्रकार उल्टा है.
prasṛtās tasya śākhā. The root is up and the branches is down. जो जड़ है वो ऊपर की ओर है और जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर है. Srila Prabhupada explained in a different place. प्रभुपाद जी ने अन्य स्थानों में भी बताया है. If you look at the material world, we don't see that. अगर हम भौतिक जगत को देखते हैं तो वैसा तो दिखता नहीं है. Because we don't have the knowledge. क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है. We don't see, and we have never seen a tree that has roots up and the leaves are downstairs. We have not seen that physically. हमने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा वृक्ष नहीं देखा जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं. But Srila Prabhupada said, if you want to see, you go to the river. लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आपको देखना है तो एक नदी के किनारे पे जाओ. At the bank of a river, you will see the tree, the leaf is down and the root is up. एक नदी के तट पर आपको ऐसा वृक्ष दिख जाएगा जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं. So the material world is compared to a banyan tree. इस भौतिक जगत की तुलना एक अश्वत्थ वृक्ष से की जाती है. That has the root upward and the branches are down. जिसकी जड़ ऊपर है शाखाएं नीचे हैं. We know that a tree has roots and it has leaves, it has branches and it has that is stem. हम जानते हैं कि एक वृक्ष का जड़ होता है, पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, मूल उसका तनाव होता है. So the branches of this tree are the different planetary systems. तो ये जो अलग अलग शाखाएं हैं इस वृक्ष की, ये अलग अलग लोक हैं. In every universe there are so many planetary systems. हर ब्रह्मांड में न जाने कितने सारे लोक हैं. So they are considered to planetary systems are what? What does it? All the planets. जितने भी लोक हैं ये क्या है? What does that say? Branches. शाखाएं हैं. Different branches of a tree. उस वृक्ष के अलग अलग शाखाएं हैं. That is how this material world is designed. इस प्रकार इस भौतिक जगत की रचना हुई है. The material mode of nature is considered to be the water. That waters are nourishes this material tree of banyan tree of material existence. और जो भौतिक प्रकृति के तीन गुण हैं वो उस जल के समान है जो इस वृक्ष का पोषण करते हैं. A sense object at the secondary root. और जो इंद्रिय वस्तु है उसे गौण जड़ कहा गया है. All these are part of the tree. और ये सभी उसी वृक्ष के अलग अलग भाग हैं. And yeah, that is true. The living entities who are living in this world, we have senses which has attraction and attachment to the sense object. और जो जीव हैं जो इस भौतिक जगत में रह रहे हैं उनका आकर्षण है और आसक्ति है अलग अलग इंद्रिय वस्तु के प्रति. So in essence, what are we talking? What are we looking about in essence? तो सार में यहाँ क्या देखा जा रहा है, क्या समझा जा रहा है? The material world is designed in a wrong way. Designed in a wrong way. कि इस भौतिक जगत की रचना सृष्टि ही इस प्रकार हुई है कि ये गलत है, गलत स्थान है. If you have a building which is not properly constructed, you are not going to be happy in that building. कोई घर किसी ने बनाया जिसको अच्छे से नहीं बनाया तो उस इंसान में रहने वाला खुश नहीं रह सकता. So anyone who is looking for happiness in this place is making a very big mistake. तो इसलिए कोई भी इंसान इस भौतिक जगत में अगर सुख ढूंढ रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है. Because this material is designed wrongly. क्योंकि इस जगत की रचना ही गलत तरीके से हुई है.
In the planetary systems, जो अलग अलग लोक हैं, varieties of living entities, अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं as वहाँ Prabhupada पर। said, the human beings, animals, horses, cows, dogs, cats, etc. प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य, पशु, गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। We are controlled by different mode of nature. ये सभी को प्रकृति के अलग अलग गुण नियंत्रित करते हैं। The entities who are upwards, और जो जीव ऊपर के लोकों में रहते हैं, they are controlled by different modes, उनको प्रकृति के दूसरे गुण like नियंत्रित the करते हैं। demigods. जैसे कि देवता, They are controlled by the mode of goodness. वो सत्व गुण में होते हैं अधिकांश। Some of us are controlled by the mode of ignorance, कुछ लोग हैं जो तमोगुण से प्रभावित हैं and some are controlled by the mode of passion. और कुछ लोग रजोगुण से। According to the mode which controls us, और प्रकृति के गुण के अनुसार जो हमें कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, our taste is different. हम लोग की अलग अलग प्रकार की रुचि होती है, Our desire is different. अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती हैं, Our activities are different. कार्य होते हैं। So, when you look at the material world, you see varieties of activities, varieties of living entities, varieties of different levels of consciousness. तो इसलिए जब आप भौतिक जगत को देखते हो, अलग अलग प्रकार के जीव, अलग अलग प्रकार के कार्य, अलग अलग प्रकार की चेतनाएं। In any planet which you may be situated in, कोई भी आप लोक में चले जाओ, ग्रह में चले जाओ जिसमें व्यक्ति रह we रहा will है, function according to the mode that control that place. हम उस लोक में उस प्रकृति के गुण के अनुसार जिएंगे जो उस लोक को नियंत्रित करता है। Based on this, the living entities are always fluctuating. इस पर आधारित जो जीव वो हमेशा इधर से उधर भटकता रहता है। You go up because you have accumulated some pious activities. You will go up. ऊपर की ओर जाता है क्योंकि पुण्य कर्म अर्जित कर लिया, You will exhaust it there. वहाँ पुण्य कर्म खत्म कर देता You है, come back here फिर नीचे आ जाता है, and accumulate again. फिर से अर्जित करता है। Therefore, this material world is called the field of activity. This is our planet. It's a इसलिए field of इस activity. पृथ्वी लोक को जहाँ हम रहते हैं उसे एक क्षेत्र कहा जाता है, कार्य क्षेत्र। Here we can cultivate goodness, we can cultivate passion, we can cultivate ignorance. यहाँ हम उपजाऊ कर सकते हैं सत्व गुण का, रजोगुण का या तमोगुण का। And that is how we are going to enjoy or suffer. और उसी के अनुसार या तो हम खुश रहेंगे या हम दुख भोगेंगे। Those who are fortunate, जो भाग्यशाली हैं they will have access to hear the scriptures, the Vedas. उनके पास अवसर रहेगा कि वो शास्त्र को, वेदों को सुने। And to hear the Vedas, it will come from the sadhus. और शास्त्रों को, वेदों को साधु से सुना जाता है। When one is fortunate to meet the sadhu and hear the scriptures, जब एक व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है कि वो साधु से शास्त्र को सुन सके, then our fortune begins. तब हमारा भाग्य का शुरुआत होता है। And by continuous practice, और नियमित रूप से अभ्यास करने के द्वारा gradually क्रमशः we will make advancement. हम प्रगति करते हैं And eventually और समय के साथ we will become liberated from this material existence. हम भौतिक जीवन से मुक्त हो जाते हैं। For having a human body, it is meant for this practice. मनुष्य शरीर इस अभ्यास के लिए मिला है। The human form of life is not meant for something else. It is meant for this activity. मनुष्य रूप और कोई चीज के लिए नहीं, इसके लिए मिला है। Therefore, इसलिए the opportunity for us to hear is given. इसलिए हमें अवसर दिया जाता है सुनने के लिए। So we have to take advantage उसका हमें लाभ लेना चाहिए and perfect our life. और जीवन को सफल बनाना चाहिए। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Comments or questions? कोई प्रश्न किसी का? Yes, well.
Hare Krishna, Gurudev. Hare Krishna. I have a question that we see in the pastime of Bharat Maharaj. He performed bhakti for most part of his life. And by a small mistake in the end part of his life, it looked that he was punished more than the mistake, because he had to come as a deer, then come as a Jad Bharat. So, how can we understand this? Because sometimes we practice bhakti and small mistake took 3 lives. So, how we understand, Gurudev? Thank you. प्रश्न ये है कि जड़ भरत ने छोटी सी गलती कर दी, भरत महाराज ने छोटी सी गलती कर दी, तो उनको 2 जन्म और लेने पड़े, तो ये कैसे समझे इसको? Don't be afraid. महाराज बोल रहे हैं कि भयभीत नहीं होना चाहिए. It is not that just little thing will get severely punished and we become afraid that if I make any mistake then I'm going to lose everything. We should not be afraid. तो ऐसा भय नहीं रखना चाहिए कि हम छोटी सी गलती करेंगे और उससे सब कुछ हाथ से निकल जाएगा. Bharat Maharaj's situation, it is described as extreme case, not a normal case. It's extreme case. भरत महाराज का जो उदाहरण दिया जाता है, उनकी परिस्थिति बताई जाती है, वो एक सामान्य उदाहरण नहीं है, वो बहुत ही एक एक्सट्रीम, बहुत ही विचित्र उदाहरण है. Krishna used him to teach a lesson. भगवान उन्हें हमें कुछ शिक्षा देने के लिए यूज कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं. And we should know Krishna cannot use conditioned souls to represent him. और हमें पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण एक बद्ध जीव को ऐसी शिक्षा दूसरों को देने के लिए प्रयोग में नहीं लाते. Krishna uses only pure devotees to represent him. भगवान कृष्ण केवल अपने शुद्ध भक्तों को प्रयोग में लाते हैं. So, even though he has practiced very nicely and he made a mistake, so he became a deer. But Krishna made him not to forget what he had practiced before. चूँकि भरत महाराज ने बहुत ही तीव्रता के साथ भक्ति का अभ्यास किया था और वो अगले जीवन में हिरण बन गए थे, फिर भी भगवान कृष्ण ने ये रखा कि उन्हें सब कुछ याद रहा. He remembered everything perfectly in the previous life. He remembers it completely. उन्हें पूर्ण रूप से सब कुछ याद था, पिछले जन्म का भक्ति किया हुआ, उनकी चेतना, सब कुछ. And he learned a big lesson. और उन्हें एक बहुत बड़ी शिक्षा भी मिली. He did not repeat that mistake again for life. उन्होंने फिर वो गलती दोबारा कभी नहीं की उस जीवन में. We make a lot of mistakes again and again and again and again. हम बहुत सारी गलतियां बहुत बार करते हैं. Bharat Maharaj only once. लेकिन भरत महाराज ने गलती एक ही He बार, never repeated it again. उससे दोबारा नहीं किया. That was Krishna's mercy. तो वो तो कृष्ण की कृपा है. So in the next time he was very determined never to make the mistake again. I didn't make the mistake again. तो अगले जीवन में तो पूरे तरह से अडिग थे कि अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा. He was able to preach pure Krishna consciousness, a very mighty king. He was able to. King Maharaj Rahugan. जब फिर उनकी ऐसी परिस्थिति हो गई कि उन्होंने शुद्ध भक्ति का प्रचार एक बहुत ही बड़े राजा को किया, महाराज रहुगण को. You think that he would have been able to do that if he had gone back to Godhead? तो क्या आपको लगता है वो भगवद्धाम चले जाते तो इतना बड़ा प्रचार का कार्य कर पाते? Krishna gave him chance to preach. कृष्ण ने अवसर दिया उनको प्रचार करने का. That in all condition, कि हर परिस्थिति में
a devotee should remain attached to Krishna in all conditions. कि हर परिस्थिति में एक भक्त को सदैव भगवान से आसक्त रहना चाहिए. If one is not on that level, Krishna will not use you to represent him. अगर हम उस स्तर पर नहीं है तो कृष्ण कभी भी हमें प्रयोग में नहीं लाएंगे. So he's an exalted devotee. तो वो तो एक बहुत महान भक्त हैं. So it was not just a normal case, it was an extreme case. तो एक सामान्य घटना नहीं है, एक विचित्र घटना है. भगवान सिखाना चाहते हैं. Thank you. धन्यवाद. Why this tree analogy is going like this? Represents our material existence, or this world itself is like a tree, or like actually I did not understand what is this tree. This tree is our attachment to this world, or our what we see this world, that is the tree, or what is this tree? प्रश्न है कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये पेड़, ये जगत है, ये पेड़ हमारी इस जगत के प्रति आसक्ति है, ये क्या है? The whole material world is compared to a banyan tree, the material world. तो इस पूरे भौतिक जगत की तुलना इस वृक्ष से, अश्वत्थ वृक्ष से की जा रही है. It is referred to banyan tree because banyan tree has many roots. और अश्वत्थ वृक्ष से ही तुलना क्यों की जा रही है? क्योंकि इसकी बहुत सारी शाखा जड़ें हैं. And very big. और बहुत ही विशाल होता So the है. material world is big. भौतिक जगत भी बहुत Has बड़ा a है lot of branches. और बहुत सारी शाखाएं हैं उसमें. Yes, it is this material world is compared to banyan tree, the whole material world. हाँ, तो पूरे इस भौतिक जगत को इस अश्वत्थ वृक्ष से तुलना किया जा रहा है. You were mentioning that this is compared to the, like when we want to see upside down tree, we can go to the bank of a river and we see that the roots are up and the branches are down. I am unable to visualize this because it is supposed to be a reflection. So whenever we see a reflection, we can imagine a left being the right, right being the left, but I'm unable to imagine the top being the down, down being the top. So could you or maybe I have to go to a branch and really see like a bank of the river, and I don't know, I can't imagine this. Got a question? Can you repeat the question? Sorry, because you can. Sorry. Huh? Is that your question, Mataji? Okay. Okay. So, you got the question, Maharaj? Yes, I will try. तो प्रश्न ये है कि एक जब हम किसी परछाई को या फिर प्रतिबिंब को देखते हैं आईने में, तो जो बाएं तरफ होता है वो दाएं तरफ दिखता है, जो दाएं तरफ होता है बाएं तरफ दिखता है. लेकिन मैं ये कल्पना नहीं कर पा रही हूँ कि वृक्ष को अगर हम नदी में देखेंगे तो उल्टा कैसे दिखेगा. ये प्रश्न है. Upside down. If you stand by the bank of a river, you will see a tree. If you look the water, you see the branches are inside the water and the roots are up. तो महाराज का उत्तर ये है कि जब आप जल में देखोगे, उस वृक्ष का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा, तो आपको ऐसा ही दिखेगा कि जो नीचे है, जड़ है, वो ऊपर की ओर है, और जो शाखा है ऊपर की ओर है, वो नीचे की ओर जा रही हैं. But if you look at the tree itself, you don't see that. लेकिन जब आप वृक्ष को देखोगे तो वैसा नहीं दिखेगा, वो तो सीधा ही दिखेगा. Although the reflection in the water shows that. लेकिन प्रतिबिंब को देखोगे तो वो उल्टा दिखेगा. When we look at the material, we don't see that. हम भौतिक जगत को देखते हैं तो उल्टा नहीं दिखता है. But those who have the eyes, लेकिन जिनके पास वो दृष्टि है,
knows that this material world is not properly constructed. लेकिन जिनकी आंखें वो तो जानते हैं, देख पाते हैं कि भौतिक की रचना सही तरीके से नहीं हुई है. The meaning is that the material world is not properly constructed like the spiritual world. The spiritual world is perfectly constructed, but here is not properly constructed. It is upside down. तो इसका अर्थ ये है कि जो भौतिक जगत है उसकी रचना या सृष्टि आध्यात्मिक जगत की तरह नहीं हुई है, जिसको बहुत सही तरीके से बनाया गया है. भौतिक जगत गलत तरीके से बना है. When you look at this material world, जब आप इस भौतिक जगत को देखते हो, we are struggling seriously to overcome all these challenges material energy is giving to us. तो हम बहुत संघर्ष करते हैं उन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए जो भौतिक प्रकृति हमारे सामने रख देती है. But you never find one person who have succeeded in doing that. और फिर भी कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिलता जो सफल हुआ है इस संघर्ष में. Because that is how it is designed. क्योंकि इसी प्रकार से इस भौतिक जगत की रचना हुई है. The only person who is free केवल वही व्यक्ति मुक्त है is a pure devotee. जो शुद्ध भक्त है. And pure devotee means he is not here. He is not here in this world. और शुद्ध भक्त जो है वो इस भौतिक जगत में नहीं है. Physically may be here, but inside he is not here. शारीरिक रूप से हो भी सकता है, लेकिन अंदर से तो वो यहाँ पर नहीं, चेतना में तो यहाँ पर नहीं है. And you see that they are not comfortable here. और इसलिए आप देखोगे कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो इस स्थान में एक प्रकार से सुखपूर्वक नहीं रहते हैं. We have heard many times. हमने बहुत बार सुना है. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada said, this place is not for a gentleman. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते थे कि ये संसार एक सज्जन व्यक्ति के लिए नहीं. Why not for a gentleman? क्यों नहीं एक सज्जन व्यक्ति के लिए? Because you not see anything right here. क्योंकि यहाँ पर कुछ सही नहीं है. And everything that should go wrong is going wrong. जो भी होता है जगत में गलत ही होता है. And nobody can change it. और कोई इसको बदल भी नहीं सकता. Make sense? Okay. Thank you, Maharaj, for the nice class. Maharaj, how do we understand Ishopanishad invocation where it says that this material world is complete and perfect in understanding with this shloka? प्रश्न है कि श्री उपनिषद में इस जगत को पूर्ण बताया गया है, लेकिन अभी हमने जाना कि ये तो पूर्ण नहीं है, इसमें दोष है, गलती है. Material world is complete. भौतिक जगत पूर्ण है. That all the wrong things will go wrong. वो पूर्ण इस प्रकार है कि जो गलत होना है वो गलत ही होता रहेगा. You cannot change it. उसको आप बदल नहीं सकते. You can complain, but you cannot change it. आप कंप्लेन कर सकते हो लेकिन बदल नहीं सकते. Why? The complete person made it like that. क्योंकि जो कंप्लेन कर रहा है उसी व्यक्ति ने वैसा बनाया है उसको. She is complete. तो इस प्रकार से पूर्ण है. It is perfect. पूर्ण है. Because who can change it? क्योंकि कोई इसको बदल नहीं सकता, उसका स्वभाव वैसा ही है. Who can change it? कोई नहीं बदल सकता. Our scientists are trying since time immemorial. हमारे वैज्ञानिक तो कोशिश कर रहे हैं अनंत काल से. What have they done? क्या किया उन्होंने? Simply to increase the dualities of material existence. जो भौतिक अस्तित्व का द्वंद्व है केवल उसको बढ़ाया है उन्होंने. So it is complete. तो इस प्रकार वो पूर्ण है. And nobody can change it. कि कोई उसके स्वभाव को नहीं बदल सकता. It's not perfect because it's like the spiritual world. That is not what it means. It is perfect because it comes from a perfect person. उसको पूर्ण इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि वो बहुत आध्यात्मिक जगत की तरह पूर्ण है. उसको पूर्ण बताया जा रहा है उसके स्वभाव के अनुसार वो पूर्ण है. Make sense? Thank you. Thank you. Hare Krishna, Gurudev. In this verse prior to this, the first verse, in that it said that the Vedic hymns are the leaves of this tree.
I cannot understand what is the resemblance. The Vedic hymns, they're the leaves of this tree. What does it mean? प्रश्न है कि यहाँ बताया गया जो इस वृक्ष की पत्तियाँ हैं वो वेदों के श्लोक हैं, वेदों में जो स्तुतियाँ दी गई हैं वो हैं, तो इसको कैसे समझें? It's in the translation, Maharaj. It's in the translation. Yeah, I've seen. It is said that there is an imperishable banyan tree that has its root upward and its branches down, and who lives at the Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas. You remember what the Vedas means? I can try, Maharaj. Yes, try. So, the leaves, they nourish the tree by absorbing the sunlight. So, the Vedas, they increase the materialistic activities of the people if they follow the Karma Kanda section. That's how they compare to the leaves. Translation. तो उत्तर इस प्रकार आचार्य देते हैं कि एक वृक्ष में पत्तियाँ सूरज की रोशनी स्वीकार करके उस वृक्ष का पोषण करती हैं। वैसे वेदों का कर्म कांड भाग को व्यक्ति जब स्वीकार करता है तो उसके भौतिक जीवन का पोषण होता है। Right. और कोई प्रश्न? Any question? Similarly, one more, like the twigs are compared to the sense object. The twigs are Buddha, like in the present verse, the twigs, where the leaves are connected, the twigs are compared to the sense objects, and the tips of the branches, they're compared to the senses. Like that also is a little difficult to understand. Like there is an analogy given for everything, like for the sense objects, it is comparing to the twigs. They are comparing. The what? Twig. Twigs. Yeah, twigs are compared to the sense objects, and the tips of the branches, they are compared to the senses. So, like, why all this analogy? Yes, explain it. Yeah. तो प्रश्न ये है कि जो शाखाएं हैं उसका जो अग्र भाग है उसको इंद्रियों से तुलना किया गया है, और जो शाखाएं हैं एक्चुअली ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हैं तो शाखा अर्थ बनता है, लेकिन ट्विग मतलब होता है शाखा से जो उपशाखा निकलती है छोटी वाली, उसको ट्विग बोलते हैं। तो उसकी तुलना इंद्रिय वस्तु से किया गया है। तो इस तुलना को कैसे समझा जाए? It is mentioned here in the translation, the twigs are the object of the senses. This tree also has roots going down, and they are bound to the fruitive actions of the human society. So your question was
What's the question? Why this analogy is made? Like what is the connection between twigs and vegetables and the leaves are very thin? What is the प्रश्न ये है कि इस प्रकार का उपमा क्यों दिया गया है कि ये उपशाखा है, ये उस शाखा का अग्रभाग है, ये इंद्रिय वस्तु है, ये इंद्रिय है. Yeah, give me an answer. No acharya has explained this, Maharaj. किसी आचार्य ने इसको समझाया नहीं है. All right. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Srimad Bhagavad Gita cities ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.